उन्हें हटाना भी शुरू कर दिया है। अच्छा मकान उन्हें हटा दिया। इस इत्तेहादी को क्या मिलेगा? इत्तेफाक के लिए शहबाज शरीफ ने सब कुछ खाने पर बुलाया। मेरे नाम से ज्यादा नहीं करता, मैंने तो कहना बाबा जी आस्ता आस्ता लब पहले तो बात तनु लब पहले तो पहले लब ले तेरे कोई टेंशन नहीं होगी। सुबह पहली हाँ मतलब मकान में कपड़ा पहन के क्यों कहते हैं जिसने हटा लिया तो सारा इसने भी हटा एक टाइट बंदे का प्लाट बनाने डबल स्टोर चलो अल्लाह खैर करेगा लब दे हुकूमत बनाएंगे, इस्तेहकाम लाएंगे, मईशत को आगे बढ़ाएंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की इजलास के बाद मीडिया से बातचीत नजीब जमात ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए चाकू और हुकूमत की जान करना होगा। हर सूरत नून लीग के हुकूमत को सपोर्ट जारी रखेंगे। हुकूमत ने कहा कौमी इत्तेहाद की शदीद जरूरत है। एक डब्बा तो शेडे बड़े पाक कर यार मैं नहीं कर लिया उन्होंने कर लिया उन्होंने आप और सारे रिटर्न आया पहले जो है 1.5-2 साल की मुश्किलें होंगी और इंशाल्लाह मुझे बहुत ही थी कि पाकिस्तान आगे 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाए। हम तो कब के G20 में पहुंच चुके होते और लगता है जैसे गुस्से से दिखाया मुझे और फिर उसके बाद बाकी दीगर जजों ने हमें किसी माफी का आज जज जो है किसी को मुंह दिखाने के लायक है। आएगा 1-2 साल मुश्किल के होंगे लेकिन है मुल्क के रास्ते निकल जाएगा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करा। अरकान भरपूर मुकाबला करने के बाद पहुंचे मुकाबला छणकना किया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਚਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਬਤ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੋੜਿਆ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ 3 ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਖੌਫਾ ਖੁਦਾ ਕੀਤਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਓਕੇ